Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, this is a class 6 general science presentation by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is water. In this topic, we will discuss about the different physical states of water. This topic is from chapter number 6, particles. As I have told you that in this chapter we will discuss the properties of matter on the basis of their particles. Students' learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know about the existence of water in 3 physical states and to describe the conversion of its physical states by heating or cooling. Contents. This lesson includes water, its physical states, its natural occurrence, effect of heating and cooling, and finally there will be an assignment. Recapitulation. Recapitulation is the recap or revision of the previous knowledge. Previously, we have discussed about solid, liquid, and gas. Let's have a look on their physical properties. Let's have a quick look on the properties of solid, liquid, and gas. In the previous lecture, we have discussed about the physical states of matter. The 3 physical states of matter are solid, liquid, and gas. We also discussed their properties of shape, volume, and flow. When we discussed the shape of solid, liquid, and gas, we came to know that solid have a well-defined shape. Only solids have a well-defined shape, while that of liquids and gases do not have a well-defined shape. Their shape is variable, it is not fixed, and when we keep them in different containers, they adopt their shapes. It means the shape of liquid and gases changes with container. Then we discussed volume. The volume of solid and liquid is well defined. It means it do not change from container to container. But when you place gases in different containers, they have different volumes, because when you place a gas in a container, it quickly takes up the whole space of the container. It means when you pour a gas in a larger container, it will keep the volume of that larger container, and the gas volume will increase in a larger or bigger container. So its volume is variable. Then we discussed about the flow of solid, liquid, and gases. Only solids are the physical state of matter which do not flow, while that of liquid and gases can flow. Liquid can flow from higher to lower level, while gases can flow in all directions. Our today's topic is water.
But before going to details of the water, we should know that what is water. Water is a compound of hydrogen and oxygen, and its chemical formula is H2O. Water is the most abundant compound on the surface of Earth. Occurrence of water. How water naturally occurs. Interestingly, you must know that water is the only compound in nature that exists in all the three physical states at a time. आपको इसकी कॉमन फिजिकल स्टेट्स नज़र आएंगी अपनी डेली लाइफ में. इसकी कॉमन फिजिकल स्टेट्स आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रही होंगी. 3 फिजिकल स्टेट्स. It exists in solid, liquid as well as in gaseous state. In liquid state it is liquid water, in solid state it is ice, and in gaseous state it is in the form of water vapors or clouds. So आपको पता होना चाहिए कि वाटर सिर्फ वो कंपाउंड है जो नेचुरली 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. और वो 3 फिजिकल स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी ये तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे. फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर. As we know that water exists as ice, liquid water and steam. Let's generalize them. Okay, which form is the solid state, liquid or gaseous state? Water in its different physical states is snow or ice, water, liquid water and steam, water vapors or clouds. So let us categorize them that snow or ice is the solid state, common water is in liquid state and steam, water vapors or clouds are the gaseous state of water. वाटर की जो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड स्टेट्स उसकी आइस या स्नो है. लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जो कि नॉर्मली वाटर होता है, रिवर वाटर, सी वाटर, ये सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं. वाइल जो स्टीम है, वाटर वेपर्स हैं या क्लाउड्स हैं, दे आर द गैशियस स्टेट ऑफ वाटर. सो एज वी हैव discussed that water is the only compound that exists in all the 3 physical states. तो अभी हमने उसकी तीनों फिजिकल स्टेट्स भी देख ली हैं कि वो 3 फिजिकल स्टेट्स कौन सी हैं जिनमें वो एग्जिस्ट करता है. स्नो और आइस सॉलिड स्टेट है, वाटर उसकी लिक्विड स्टेट है और स्टीम, वाटर वेपर्स या क्लाउड्स उसकी गैशियस स्टेट है. अंडरस्टैंड? Let us discuss water in its solid state. You can see these pictures. In these pictures you can find the solid state of water in its solid state. Snow or ice are the solid states of water. Solid water is present as glaciers and ice caps. ये जो स्नो या आइस हैं ये ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है नेचर में. ये बनती कैसे है? स्नो या आइस जब वाटर फ्रीज होता है ना तब बनती हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दैट ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर. जब ये स्नो या आइस मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो फिर वहाँ से रिवर्स और स्ट्रीम्स बनती हैं और वो रिवर वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. अंडरस्टैंड? सॉलिड स्टेट वाटर की कौन सी है? स्नो और आइस. ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वाटर फ्रीज होने पे बनती हैं और ये जो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हैं देज आर द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर.
Water in its liquid state. At room temperature, water exists in liquid state. That water is called tap water. Liquid water is present in ocean, rivers, lakes, underground water. So you can say all these are the sources of liquid water. We use liquid water in our routine life for drinking, cooking, washing, agriculture, etc. And liquid water also helps to regulate the temperature of the earth. रूम टेम्परेचर पे हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. उसके सोर्सेज हैं ओशियन, रिवर, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर. इसी लिक्विड वाटर को हम ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग इन सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और यही वाटर अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. अंडरस्टैंड? दिस इज़ द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर. Water in its gaseous state. Steam is the gaseous state of water. Steam is formed when water is boiled. The other gaseous states of water are water vapors in atmosphere and clouds. Water vapors and clouds are responsible for rainfall. वाटर की गैशियस स्टेट्स कौन कौन सी हैं? स्टीम है, वाटर वेपर्स हैं और क्लाउड्स हैं. वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. स्टीम कब फॉर्म होती है? व्हेन वी बॉयल वाटर. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तब स्टीम बनती है. एंड द वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल. मीन्स क्लाउड्स और वाटर वेपर्स के बगैर रेनफॉल मुमकिन नहीं है, बारिश मुमकिन नहीं है. आजकल मानसून सीज़न चल रहा है तो आजकल एयर के अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं और जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो तब उनकी कंडेंसेशन से रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है. सो गैशियस स्टेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. गैशियस स्टेट है कौन सी? स्टीम, वाटर वेपर्स और क्लाउड्स. ये सारी गैशियस स्टेट्स हैं. स्टीम कैसे बनती है? वो बॉइलिंग वाटर से बनती है. वाटर वेपर्स और क्लाउड्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल. इन्हीं की वजह से बारिश मुमकिन होती है. अंडरस्टैंड? Let's have a sharp look on distribution of water. We know that water naturally occurs in all the three physical states: solid, liquid and gas. In solid state, water is present about 2.1%. टोटल वाटर का 2.1% सॉलिड स्टेट में यानी ग्लेशियर्स और आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. यही वो वाला वाटर है जो कि फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स के तौर पे ज़्यादातर यूज़ होता है. अबाउट 97.899% इन लिक्विड स्टेट. जैसा कि मैंने आपको बताया, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, इन सब में जो वाटर प्रेजेंट होता है या जो अंडरग्राउंड वाटर भी है, वो सारा कौन सा है? वो लिक्विड स्टेट में होता है. तो इसलिए मेजॉरिटी जो वाटर होता है 100% में से 97.899% हमारे पास लिक्विड स्टेट में वाटर प्रेजेंट होता है. एंड ओनली अबाउट 0.001%, ये बहुत थोड़ी सी फ्रैक्शन है वाटर की, विच इज़ प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इन एटमॉस्फेयर. वेपर्स, क्लाउड्स, मॉइस्चर जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो 0.001% है ओनली. सो वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेजॉरिटी लिक्विड स्टेट में होती है, थोड़ा सा वो सॉलिड स्टेट में है और बहुत ही थोड़ा गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है. Effect of heating. What happens when we heat water in its different physical states? The three different physical states of water are ice, liquid water and steam. On heating ice melts
and changes into liquid water. जब आप आइस को हीट करते हो तो आइस मेल्ट हो जाती है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. एंड while we heat liquid water, it boils and changes into steam. हीटिंग पे लिक्विड वाटर बॉयल होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स हीटिंग का इफेक्ट होता है सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. आइस लिक्विड वाटर में और लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग. The temperature at which ice melts is called its melting point, and the melting point of ice is 0 degree Celsius, and the boiling point of water is 100 degree Celsius. 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करता है जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होती है. Effect of cooling. What happens on the states of water when we cool down them? Here in these two pictures you can see the liquid water on a window and a solid water formation from a liquid water. Here on cooling, steam condenses and changes into water. हीटिंग पे कूलिंग पे स्टीम कंडेंस होती है और वाटर में चेंज हो जाती है. while on cooling liquid water freezes and changes into ice. कूलिंग पे जो लिक्विड वाटर होता है वो फ्रीज होता है और आइस में चेंज हो जाता है. ऊपर वाली पिक्चर जो है वो आपको शो कर रही है जब हम गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं सर्दियों में और हमने विंडोज़ सारी क्लोज़ की होती हैं तो तब जो ग्लास पेन्स होते हैं विंडोज़ के वहाँ पे आपको फोग नज़र आती है और कुछ टाइम गुजरता है तो वो फोग लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये इसी तरह की फोग सी थी जो कि गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर बना रही है. जबकि दूसरी दो डायग्राम्स जो हैं जो दो पिक्चर्स हैं वो आपको शो कर रही हैं कि इनमें जो लिक्विड वाटर है वो फ्रीज होके सॉलिड वाटर में या आइस में कन्वर्ट हो रहा है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. सो कूलिंग के इफेक्ट में आप बता सकते हो कि स्टीम जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, जबकि लिक्विड वाटर जब कूल करने पे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं. और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का यानी जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. अंडरस्टैंड? इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स. क्या वाटर की फिजिकल स्टेट्स चेंज होती हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट. हम उसको कंबाइनली समराइज करते हैं यहाँ पे दैट हीटिंग और कूलिंग वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट. वाटर को हीट करने पे या कूल करने पे उसकी स्टेट चेंज होती है और कैसे चेंज होती है ये सब आपको यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द रेड एरोज शो द हीटिंग इफेक्ट एंड द ब्लू एरोज शो द कूलिंग इफेक्ट. If you can see from left to right, solid ice on heating melts and is converted into liquid water, while liquid water on heating boils and converts into steam. What is the cooling effect? On cooling, from right to left, on cooling, steam condenses and forms liquid water, while liquid water on cooling freezes and forms solid ice. सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ. सॉलिड आइस हीट करने पे मेल्ट होती है और लिक्विड वाटर फॉर्म करती है, जबकि लिक्विड वाटर कूल करने पे फ्रीज होता है और दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है. हीटिंग पे मेल्टिंग होती है और कूलिंग पे फ्रीजिंग प्रोसेस होता है. जबकि लिक्विड वाटर को जब आप बॉईल करते हो हीट करने पे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और
स्टीम को जब आप कूल डाउन करते हो तो उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और वो दोबारा से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? We can say that heating or cooling water can change its state. Let us have a review of the lesson. In today's topic, we have studied about the three physical states of water. Its solid state is snow or ice, liquid water, and steam or water vapors, which is the gaseous state. वाटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हमने यहाँ पे स्टडी की थी. स्नो और आइस उसकी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड वाटर जो कि नॉर्मल वाटर होता है, एंड स्टीम और वाटर वेपर्स वो उसकी गैसियस स्टेट है. देन वी हैव स्टडीड द हीटिंग इफेक्ट. इन हीटिंग इफेक्ट ice melts and forms liquid water, while liquid water on heating boils and form steam. फेज चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है हीटिंग पे. आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. कूलिंग इफेक्ट. ऑन कूलिंग, रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस. स्टीम चेंजेस इनटू वाटर while water changes into ice. स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड वाटर फॉर्म करती है और लिक्विड वाटर फ्रीज होकर आइस फॉर्म करता है. So in our today's topic, we have learned about physical states of water. Snow or ice is the solid state, liquid water is the liquid state of water, and steam or water vapors is the gaseous state. What is the heating effect? On heating, ice converts into water, water converts into steam, while cooling effect is that steam condenses to form water and water freezes to form ice. Dear students, here is an assignment for you. You have to answer that you have to name a substance that commonly exists as a solid, a liquid, and a gas. Question number 2. Name the solid, liquid, and gaseous state of water. Dear students, attention please. Complete this task within the next 24 hours and submit it in General Science discussion group in order to make sure your attendance. Please submit your task by tomorrow morning. Dear students, that's all for today. Hopefully you have understand the topic. Thank you and have a nice day.